अच्छा मुझे कैसा लगेगा विक्टोरिया होगा क्वेश्चन का होगा हाँ मुझे वही चलो थोड़ा खाना कैसे लगेगा आज के बाद 3 बजे सुबह 3 बजे मेरे मतलब एग्जाम के बाद ही तुम 10 बजे पहुंची चेक किया कि कोई प्रोजेक्ट देंगे क्या होगी मेरे दिन नहीं चाहिए बस चलेगी तो कमाल कर मैंने एक स्टूडेंट चली तो मुझे बोला कि उनको लगा कि मुझे पता चल गया मुझे बोला मैं आंटी को फोन किया था मतलब प्रिया की तो आंटी ने उठाया फिर आंटी को यहाँ पे टंगी थी को मेरी तो आंटी गाने लग गई मेरे एग्जाम स्किप हो गया ना अभी मुझे ईवीएस वाला मॉडल ईवीएस वाले पे एक बार क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है नहीं ईवीएस का मॉडल नहीं देना क्या ईवीएस का मॉडल नहीं देना क्यों मैं फ्लाइट है ना तो फिर उसके बाद पेपर कैसे देखते हो है ना तो एग्जाम नहीं होगा तेरा फिर मार्क्स एक्सेप्शन मतलब मैं लेटर दूंगी अभी किसी को बोलना नहीं हाँ मुझे एक्सेप्शन नहीं होगा कि सेकंड डेट ऑफ मतलब प्लेस ठीक है मुझे फटाफट जाना पड़ेगा मतलब वहाँ पे कोई था नहीं जिसके लिए लेटेस्ट मतलब कुछ तो जान चाहिए तो सफारी फटाफट लोगों को जाना पड़ा उधर नानी के यहाँ पर मेरा भी हंड्रेड के कोई था नहीं तो फिर एक्सेप्शन दे देंगे जिसका एग्जाम दिया उसमें सी परसेंटेज आगे को फोन करो क्या हाल है चाहिए देखा बेचारे आए लोग बर्थडे को लड़ते हैं एक्चुअली यार पर वो क्या है ना मेरे को ईश्वरी को देखते हैं वो भाग जाते हैं मैंने मेरा बर्थडे ना हमेशा एग्जाम टाइम में मैंने हम लोग का एग्जाम कैसे था अक्टूबर तक चला हेलो काके आ रहे हैं क्या लेक्चर का अच्छा ओके ओके मला वाटलं त्या माहित नव्हतं म्हणून हो मी आली मला आलेला दिसला ना म्हणून केला तो हाँ हाँ अच्छा ठीक है चला हाँ चला हमारे सोसाइटी में तो शादी है सारे स्टूडेंट दादा दादी है ना से सिर्फ आने थे आंटी का कैसा गया आंटी का तो मेरा कैसा गया मैं कुछ अपने मन डाइवर्ट करने के लिए तो इंटरेस्ट नहीं था तो पढ़ाई तो करने वाली थी पढ़ाई कर लेंगे ना तो पता है जब हम बाहर आते हैं अगर हम लोग घर से कुछ तो हो जाता है ऐसे टाइप में तो घर पे से पूरा अलग फीलिंग आता है पूरा से सैड सैड जैसा लगता है किसी में भी मन नहीं लगता हमारा अगर बाहर आए थोड़ा सा अच्छा फिर से घर में गए तो वही फीलिंग आता है बस हम दोनों ही हैं हमेशा को मैंने कुछ खाया तो ऐसे करने का नहीं है उसको फोन करना चाहिए कि थोड़े दिन बात करना चाहिए सुबह से सब कुछ फोन नहीं करते मेरी मम्मी को चुप कर आते मतलब फोन हो गए नाना मेरा पापा भी लगे पापा मतलब आए थे बट मुझे सोचते उसको भी संभालना पड़ेगा तो कोई चाहिए ना हमने अभी चुप कर दी दूसरी डेट का फोन आया उसको बात करने वापस चुप कर दी आगे हो गई बहुत रोई तो क्यों रो रही है बात तो करते क्या था सुबह को मैं खाना चला गया अच्छा पैसे चॉकलेट मैंने देखा तो चला
एग्जाम के लिए तैयारी करनी नहीं मैं मान के डेट के बारे में कुछ नहीं तो रात को बहुत 3 बजे हाँ रात को कैसे लॉग बैठे की तरफ चला तो मैं सोचती हूँ कि कैसे क्या होगा सामने कोई मानो उनके सामने मतलब बैठे बैठे कोई है तो देखने के लिए कोई जगह रहता है हाँ मैं सोचती है सामने कुछ पता नहीं क्योंकि मेरा एग्जाम था उनको पता था हिस्ट्री का एग्जाम में बहुत पढ़ाई की गई मैंने भेजना हो तो मैंने सुबह को उनको कॉल नहीं किया उनको पता था मैं 6:30 तक निकल था तो मैंने 6:50 को कॉल किया बताया मेरे पापा रिटर्न है मम्मी को मम्मी को एक सेम मतलब हुआ कि चली गई तो अच्छा था ना घर आ गई तो मम्मी चली गई कोई जिंदगी नहीं थी मेरे को कोई नहीं आता जॉब में देखना नहीं है मैं खुशी खुशी आ रही थी कि मैं पेपर बहुत अच्छा गया फिर घर जाके नानी से पर बात करी मेरे को मेरे भाई को सेम सप्लाई की नानी मिली हम सब मैंने सोचा क्यों बता रहे हैं कि हमारी और खराब है मेरे भाई ने कहा तो उसने नहीं समझा मुझको वो आ रहे थे तुम जब वो ऐसा पास की बात है इसलिए उसने पहले बता दिया नानी छोड़ से पहले तब हमारी बात कर रही थी इसे शायद शुरू में बात करें और मुझे एक बात की तो खोल रही थी मेरी मम्मी को देखना ढूंढ रही थी कि इधर वो इधर है और सबसे बेकार चीज है ना अभी भी एकदम मुझे लगता है जैसे ही मेरी नानी घर पे आई थी 2 बार बैठने हुए घर पे आई उनका जैसे ही ऑक्सीजन मास्क थोड़ा खाना पानी लगेंगे मैं वीडियो कॉल में मतलब देख रही थी तो देखा मैंने तो मेरे को चाहिए बोला मैं क्यों नहीं आई जैसे मैं मेडिसिन लेके 2 बार बैठे थे सब कर रहे थे कि इसका बात करें मेरी जो अपना मेरी यहाँ पर भी जाने गए ग्रेट ग्रैंडमदर थी ना उसके बारे में ऐसे ही डॉक्टर ने बोला था चलेगी 1 महीने तो चलेगी बोला नहीं देख सकते हो ना जिस दिन एग्जाम खत्म हो उसी दिन फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगी हाँ वैसे बोला था मेरी मम्मी को आने में कितने दिन हुए 2 दिन ही हुए अब मेरी वजह से मम्मी कल पे आई थी नहीं तो मम्मी से सूरज सामने का क्या बोलते हैं बड़ा एग्जाम खत्म हुआ सूरज सामने का हो गया आगे हो गई कैसा बच्चा आ रहा है एडमिशन में ना से कैसे तो ज्यादा अभी तो भी आ गया मैंने क्या बोला कि गुड इवनिंग सर ओनली गो बैठो बैठो Okay, so I think we are meeting after a very long gap. yes Where did we stop in the last class? Huh? Sound. We completed sound? yeah We completed? yes Which numerical level? So anybody has any question? yes What question you have? numericals also So you have another unit of sound, infrasonic. वो सब भी हो गया क्या? infrasonic वो सब भी That means you have completed everything. yeah flash filters ultrasound Okay, so sound is completed. Next chapter is current electricity. We had started this. no Shall we start it now? yes So we have only 2 chapters remaining: current electricity and magnetism. Okay, so let us start current electricity.
first topic is sources of current. First, let us understand what are the types of current. What are the types of current you are familiar with? Types of direct and indirect current. Direct and alternating. Okay. DC and AC. You have DC, direct and DC, or alternating current. AC. So first you should understand there are two types of current, direct current and alternating current. So ये types of current. Types of current. Which current? Electric current. Okay, there are two types of electric current, DC and AC. So, the current which is running your fan, why do we need current? We need current. We need electric current to run electric appliances, electrical devices. Such as fan, which bulb? Light bulb. Light bulbs. And these two are the most common, light and fan, right? Then there are air conditioner, motor, so many things. So electrical devices or electrical appliances, as they are called. Devices. What is the difference between electrical devices and electrical appliances? No difference. Just synonymous. Okay. Then there are electronic devices also. Now mobile is electronic. Yeah. Computer is electronic. The difference between electrical and electronic is a lot of energy is required for electrical devices, whereas electronic devices work on small energy. Okay, so that's one difference. But anyway, that's not the topic. Why I'm giving you all this is so that you start understanding what is given next. तो ये समझ में आया कि हमको कितने टाइप के करंट होते हैं and why we require current. You understood this? So since we need current to run the devices, so what are the source of current? Who supplies current? Right? We need to know from where to get the current. Right? That is sources of current. So sources of DC. Direct current. Sources of direct current are cells and batteries. Okay? Where do you get? So mobile operates on cell. Okay? So cell. So and a torch operates on combination of cells. So multiple cells make battery. Okay? So batteries are nothing but combination of cells. Two or more cells. Is the difference between cell and a battery clear? Yes, sir. So I guess everybody has seen a cell. Yes. Yes. Is there anyone who has not seen a cell? But dry cell, right? Obviously, yes. Dry cell. Yes.
This is how a cell looks like. Yeah. So in the market you get this. And what are the part of cell? This various sections. So you have this. This is what anode. Okay. So this is what it is. So this is the positive terminal. So the cell that you get in the market is like this. So tip is the positive terminal and the base is the negative terminal. So it is marked here plus and minus. If you take the cell, go and take the cell and move, you can see that it is marked plus and minus. Okay, this is plus. This is plus, the other side will be minus. Is that understood? Yes. So this plus and minus, these are two terminals. It is called terminal. This is negative terminal. Terminal means this is the end of the cell, one end, and this is the other end. So symbolically, the cell is represented like this. Positive terminal is the longer line, negative terminal is the short line. Okay. And then now we will connect wires to it. If I want to connect a bulb, let us say, so I'll connect a bulb between these two wires. Now I'll connect a switch also. Okay, this is a switch for on and off. This is the appliance, bulb is the appliance. So can you see these two dots? Each electrical device also will have two wires, so that you are able to connect to the two terminals of the cell. One on the positive side, the other on the negative side. Okay. So when the switch is closed, when this right now it is open. Open means off. Close means on. When you close, then the circuit is complete. Now this is nothing but an example of electric circuit. Okay. So this is the simplest electric circuit. So what do you have in the electric circuit? A bulb and So you have a bulb, then you have a connecting wire. yes. Okay. So you need the appliance and the connecting wires. Will the bulb glow without the cell? No. So you require the source of current. Okay. So cell is the source of current. Right? And you require a switch to control the, For the transfer of yes, to start and stop the current. You know, to start and stop the current, you require a switch. yes. Is that clear? So when this is closed, that is when the current will flow from positive to Negative. negative. Current always flows from positive terminal of the cell to negative. Same thing I can represent like this. So I can have a switch here. Like this. So this can be called a switch or key. So switch is also represented like a bracket. If it is just a bracket, the circuit is open. When there is a dot, that means the circuit is closed. So key can be like this. This is tapping key. This is called tapping key. Tap, press. When you release, it will open on its own.
Other is plug key. So there is a slot like this. When you insert, then the key is closed. Okay. So you have to insert something into it. Close. So this is called plug key. This is cell. These are connecting wires. And this is your bulb. Bulb is either electric device, it is also called load, or it is also called appliance. So many terms are there, electrical appliance, load, etc. Is that clear? Now, are you familiar with the battery? Have you seen a battery? Like inverter battery, you have seen, right? Yes. So battery looks very big. So inside it, we have multiple cells. So there are many cells. You see, inside 1, 2, 3, 4, 5. These are in this also RC cards. Yeah, car batteries are also there. They are chargeable. This, yes. Yeah. So we are coming to it. Okay. So you have, these are one-time use. This can be used only one time, right? But this is, you can reuse it. Like, this is a rechargeable cell. Okay. So mobile is also battery. It has multiple cells inside. Yes. Okay. So battery is nothing but combination of one or two or more cells. Two or more cells. So is this clear? So this is what is called as electric circuit. The closed conducting path consisting of the source of current, connecting wires, the load or appliance, and a switch. The closed conducting path makes electric circuit. Now, the types of cells. There are two types of cells: primary cells and So primary is the temperature. secondary cell. Yes. So we have the AC. No sir. So there AC लेके आ रहा है remote. ठीक है. So ये हो गया तुम्हारा battery. Battery with multiple cells. So how you represent a battery? One after the other. थोड़ा temperature increase करो. So battery में only the first and last terminal sign is shown. Okay, only the first and the last terminal. They are connected like this. The longer bar and the smaller bar, then the connection is in between, not between the long and small. So what is the difference between primary cell and secondary cell? Primary cell cannot be recharged. Okay. Whereas secondary cell can be recharged. Cannot be recharged. Can be recharged. Can be used. Okay. So basically, what is inside a cell? Cell composition, cell structure. This I am giving you extra. Basically, a cell, this is the schematic diagram of a cell. Cell consists of an electrolyte. So this is structure. In your book it is given, but here it is not given.
Yeah, this is cell structure, right? So inside cell you have electrolyte, which is basically dilute acid, diluted H2SO4. Okay. So if the H2SO4 is diluted, it will exist in the form of ions, hydrogen and sulfate ions. Huh? So this is diluted acid. Diluted acid means acid mixed with water. So when you mix acid with water, the compound will change into ionic state. Okay. So you'll have hydrogen ions and sulfate ions. Now you will put two electrodes in this. So let us say one is copper and the other is zinc. Copper and zinc. These are two electrodes. What are the electrodes? This. So positive terminal is one electrode, the negative terminal is other electrode. So what is happening? A chemical reaction takes place between the electrode and the electrolyte. So what does electrolyte has? It has H2 plus plus ions. It has H2 plus plus ions. And it also has SO4 minus minus. Okay? So H2 plus plus ion have 2 electrons less. And SO4 minus minus has 2 electrons excess. Yes. So what happens? And copper has tendency to easily donate electron because its last shell has only one electron. It is group 1 element. So group 1 has only one electron in their valence shell. So it will easily donate one electron and stabilize. Copper. Copper is in group 1, right? CO2 plus sir. CO2 So second number, 2 plus. Cu plus second. Group 2. Cu plus Copper. plus इंटेक 3 plus. कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो थोड़ा Copper element. CO2 plus उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 11 ग्रुप 2. ग्रुप 11. Atomic number is 29. उसके लास्ट शेल में कितना है? 28821 2821 99 एक सेकंड कितना 20 ये कितना हो गया? 28 1 आएगा लास्ट में. हां 1 आएगा. ठीक है. तो ऐसा है. ठीक है ना? ये क्या करेगा? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. अभी एक ही कॉपर एलिमेंट थोड़ी ना. कॉपर वायर में देयर आर बिलियंस ऑफ कॉपर एटम्स. तो क्या करेगा? इट हैज since it has only one electron in the last shell, it easily gets rid of it. तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. So 2 electron will be accepted by E और E accept करके ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस. It will come out as hydrogen gas. ठीक है. But after losing 2 electron, copper पे क्या आ जाएगा? Positive charge आ जाएगा. Isn't it? So this will develop positive charge. Isn't it? So when electrolyte reacts with copper, the copper electrode becomes positively charged. अब like charges क्या करता है? Repel करता है. Repel करते हैं Zn2 plus SO4. है ना?
और वैसे ही Zn पे क्या होगा, SO4 डिपॉजिट होएगा, every SO4 element deposits on Zn, it will give 2 extra electrons to it. Zn पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब कॉपर तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव, Zn क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो this will not go on forever, this chemical reaction will stabilize after some time, it will reach a equilibrium state. So at equilibrium state, the two terminals of the cell will develop positive and negative, equal positive and equal negative charges, ठीक है। Why it will not react further? देखो, once the electrode has acquired sufficient charge, now when the H2++ approaches it, it will repel it, because now it is positively charged. Okay, so once the equilibrium state is reached, at equilibrium, state, no more charges will develop on the electrodes. And the chemical reaction stops. ठीक है, so this is what is a basic cell. एक बार रिएक्शन हो गया, अब दोनों इलेक्ट्रोड में चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So when you buy a cell from the market, तो क्या होता है, the cell has got potential difference, क्या होता है उसमें, potential difference, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अभी तुमको आने वाले हैं, अभी जो तुम पढ़ रहे हो ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है इस बुक में, तुम्हारे बुक में है तो पता नहीं, सेलिना में तो ज्यादा डिटेल नहीं है, 10th में है ज्यादा डिटेल, ठीक है। तो सेल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किसमें, वोल्ट में। Therefore, cell has potential difference, which is measured in volt. Now volt तुमने सुना है, have you heard about volt? Yes. So that is nothing but potential difference of the cell. So when you buy this kind of a cell, right, so what is the potential difference of a dry cell? Coincidentally, I have a dry cell with me. See, what is the potential difference? What is the potential difference? Spirit. Is it written? Is it printed? The dry cell is completely. That's correct. That's a dry cell.
look here, it's written 1.5 volt. It's mentioned on the cell. You see, 1.5 volt. सर वो ऐसे बैटरी को भी लिखा है मेरे पास बहुत सब जगह लिखा है. सर 9 वोल्ट से बैटरी होगी प्रोजेक्ट के लिए Dry cell specs. Specs मतलब specifications. So these cells come in different shapes and different sizes. So AA, AAA. Yeah? So AA is pencil cell, and AAA is the one which goes in remote, very small, even smaller than. This will go in your wall clock. Yes, one. But this will go in remote. This will go in some toys inside. Got it? So it has different voltages. ये कुछ टॉर्चेस में जाता है ना सी वाले साइज हाँ. और ये डी वाला किसमें जाता है वही बड़े से. पहले ट्रांजिस्टर यूज करते थे उसमें जाते थे. टॉर्चेस में ये जाते हैं. ये गांव में मैंने देखा है कुछ लोग यूज करते हैं इतना बड़ा सेल किसी में अभी इतना बड़ा सेल नहीं आता. अभी तो एलईडी में बहुत कम लगता है. छोटे वाले सेल से काम होता है. Basically what I am trying to tell you is पोटेंशियल डिफरेंस किसमें लिखते हैं? वोल्ट में. तो जनरली सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? 1.5 वोल्ट. और सेल इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. सोर्स ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट आर सेल्स. एसी करंट का सोर्स क्या हो गया? ये मेंस दिख रहा है. ये जो सॉकेट है तो दो होल दिख रहा है इसमें. इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव. इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है एसी का? 220 वोल्ट्स. कितना? 220. कितना फर्क हो गया? सेल में कितना है? 1.5. एसी में कितना है? 220. सो अगर एसी चलाना है तो सेल से चलेगा नहीं. यू नीड बिगर सोर्स ऑफ एनर्जी. समझ में आया? तो एयर कंडीशनर चलाना है, हीटर चलाना है, गीजर चलाना है, ठीक है, उसके लिए चाहिए एसी. समझ आ गया? फर्क समझ में आ गया? तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग. तो इसके लिए भी छोटे सोर्सेज ऑफ करंट पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अच्छा. अब जब सेल यूज करेंगे तो क्या होगा? सेल को यूज कैसे करेंगे? देखो सेल यूज करने के लिए हमारा सेल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव. अभी हम इसमें कनेक्टिंग वायर ज्वाइन करेंगे. और ये स्विच, जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे ऐसे ये बल्ब क्या होगा? लो हो जाएगा. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, ए और बी के बीच में. ए और बी के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स है. बी पे क्या डिपॉजिट है? नेगेटिव पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. और इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है. तो जैसे ही तुम ये बाहर का कनेक्टिंग वायर ज्वाइन करके बल्ब के साथ इसको प्रेस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इधर आएगा, ये भी आएगा ना. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया. फिर से रिएक्ट करके जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया वो केमिकल रिएक्शन से फिर से आ जाएगा. समझ आया? तो जब करंट कब तक चलेगा? जब तक ये केमिकल रिएक्शन कर करके इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है. ठीक है. देखो फॉर सिंप्लिसिटी समझो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था बैठ. ठीक है. तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो ये जैसे इसको कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो अब इधर कितना हो गया? 9. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना होना चाहिए था? 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो फिर से केमिकल रिएक्शन अब होगा क्योंकि चार्ज कम हो गया ना. तो जब भी करंट फ्लो होगा तो सेल विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू द टर्मिनल और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट चलता रहेगा. समझ आया?
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? लो टू हाई पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर तो फ्लो नहीं होगा क्योंकि केमिकल रिएक्ट कर करके तो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया है। तो अभी बाहर कंडक्टिंग पाथ मिलेगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट अलाउज फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, वही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा इस साइड, तो ये लो से हाई फ्लो हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? कभी भी वाटर क्या होता है? हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है। वाटर कैसे फ्लो होता है? हाई से लो। कोई भी ड्रॉप करेंगे सब्सटेंस तो हायर हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है। तो रियल लाइफ में हमेशा हाई टू लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में लो टू हाई होता है। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, कन्वेंशनल करंट। क्या किया है? कन्वेंशनल करंट। So what is the direction of conventional current? It is opposite to the direction of electron. अभी इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है? ये डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन हमने सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या बताया? उल्टा। So we have adopted this convention. Why have we adopted this convention? क्योंकि रियल लाइफ में हर चीज हाई टू लो होती है। रियल लाइफ में एवरीथिंग इज फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में लो टू हाई होता है। ठीक है, सो टू मैच इट विद द रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन वी हैव डेवलप्ड दिस कन्वेंशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट। बात समझ में आ गई? अब करंट है क्या? करंट इज नथिंग बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इज rate of flow of charge across the cross section of the conductor. ये है करंट। करंट का सिंबल क्या है? I, that is I is equal to Q by T. The symbol for charge is Q. Okay, what is the symbol for charge? Q. You can take capital Q or small q, doesn't matter. Okay. So how is current defined? It is the rate of flow of charge. Let's say this is the conductor. Okay, now electron is flowing. So in this conductor, what do you have? You have like this. This is a solid conductor, so it is made up of atoms. Okay, so when you apply cell, so conductor has lot of free electrons. So sorry, this is minus. So this cell will repel this electron because electron has negative charge. Electron carries negative charge. So this will repel. So electron will start moving in this direction. Okay. What did we say? When the electron moves in this direction, we will say the current is moving in the other direction. So now the current is in this direction, like this. So if you take this cross section, let's say this is the cross section at any given time, right? So charge is made up of electrons. So it's not that only one electron will cross. Yeah? So many electrons will cross, right? So what is the total charge? Let us say n electrons are crossing, and one electron carries E charge. E is the charge.
Okay, so total charge crossing Q in say time t, so Q amount of charge crosses in time t. Then the amount of charge crossing across the conductor's cross section per unit time, Q by T, that is correct. Got it? Charge is made up of not just one electron, there are so many electrons because atoms are in millions and billions. Okay? Is that clear? Yes. So you have to understand what is the charge on electron. Charge on electron is equal to minus E. 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Charge on electron is, this is the numerical value of the charge. C is the unit of charge, coulomb. Okay, C is. So what is this positive? Atom can be represented like this because once the electron leaves the atom, then it becomes positive ion. Inside the conductor, this is the charge of the conductor. This charge comes here, right? Then cell will supply one more electron. The lost charge will be provided by cell because once this cell charge comes here and neutralizes with the positive charge, right? Then another electron will be supplied and the process will go on. So without cell, there is no current conduction possible. Okay? It's little difficult to understand when you study it the very first time, but you will repeat it so many times that even in your sleep you will remember. Since this is the first time the process is being introduced, you might feel it is very difficult, but you're going to learn it 100 times. Is that clear? So what is this plus? This is the ion, the atom which lost its electron, it will become positively charged. Atom as a whole is charge neutral, equal amount of positive and equal amount of negative charge. So one electron less means one negative charge is less. So excess positive charge, that's why atom is shown as positive ions. And they are fixed in the conductor, they don't move. What moves is only their valence electrons under the influence of potential difference. So potential difference exerts electric pressure and the electron begins to flow. Is that clear? Yes. So what is C? Coulomb, unit of charge. The unit of charge. So it is, what is the unit of current then? It is called ampere. What is the unit of current? Ampere. So it is given as 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. A is ampere. So when 1 coulomb of charge crosses the cross section of the conductor in 1 second, then we say the current flowing through the conductor is 1 ampere. Okay? Is that clear? And what is N? N is the number of electrons. It's integer. So half electron cannot pass. So N has to be either 1, 2, 3, 4. It has to be a integer, full number. Okay? At a time, full 1 electron has to pass, not half. Then only it is counted as 1. So is that clear? What is Q made up of? Yes. Okay. So we say a 1 ampere current is flowing when across this cross section 1 coulomb of charge is passed. Now how many electrons are there in 1 coulomb charge? Let's find that out. Are you writing this? It's completed. Okay. So do you have any question? Do you want me to stop so that you can digest the concept? Till here, do you have any question? Can you repeat that I is equal to quality? That's how the current is defined. Electric current is defined as the rate of flow of charge. How much charge is flowing in unit time? That is current.
Q is the number of electrons. I mean, how many number of electrons are making that charge? Q is n times E. It's not just one electron flowing, no, in time t. Many electrons. So how many electrons? N electrons. T is the time. Okay. That's why, no, time unit is second. Charge unit is coulomb. Current unit is ampere. So ampere is 1 coulomb of charge flowing in unit time. Now, how many electrons are there in 1 coulomb? That's the next question. So since Q is equal to NE, therefore N is equal to Q by E. So if Q is 1 coulomb, what is E? It's 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So this will give you the number of electrons in 1 coulomb. So when you divide it, you will get 6.25 into 10 raised to 18 electrons. These many electrons constitute 1 coulomb. Got it? So it's almost, so it's a very big number. Billion times, 6 billion billion. Billion times billion. It's a humongous number. Okay? That many electrons, when they flow in 1 second through any conductor's cross section, then we say the current flowing is 1 ampere. So 1 ampere is a very large current. Can kill you. So the current flowing in our household is of the order of ampere and more. That's why you get a shock. So you get a shock for a fraction of a second. Yes. You can't hold the wire, live wire in your hand like this. Okay. Understood? This is a lot of energy. When the current flows for more than a second, then you get a very unpleasant experience in the form of an electric shock. Okay. Like somebody slaps you is also a shock. The current will really shake you so hard that you will not even understand what happened to you. Anybody experienced electric shock? Yes. Yes, sir. Your experience. Slide, fine. Yeah. Okay. Don't try to deliberately experience it. Okay. So now what I want you to do is read the difference between. Next topic is symbols used in electric diagrams. Read the primary cell and secondary cell difference. See if you have anything you want me to explain. So what is voltized cell? These are different types of cell depending upon the electrodes chosen. Listen. Cells consist of what? Electrodes and electrolyte. So different combination of electrodes and electrolyte give you different types of This cells. is voltaic cell. This one is So you have different types of cell. You have simple voltaic, Leclancy, Daniel, dry. So dry cell with the electrolyte is not liquid. Yeah. Understood? It's like a paste or semi-solid. So we are not going into that much detail. It is not Red expected. color. I saw it once. What? It is in red color. That isn't it? It's not like dry or that. For that you have to break the cell. And see. Yeah. So only when the cell goes bad, that time you break and see. But I don't recommend that. Could be poisonous. Yes. Goes into your eye somewhere. Once my brother tried to make this small small cells are coming in thermometer. Oh, lithium cell. Yeah. Watch cell. He tried to do that Then- in last. Yes. So because this is, it has charges, no? And what we're doing with my mother was making that toys. So read the difference between, let's read one by one. First point is, chemical reaction is, in case of primary cell, we are just share one book with them. Share one book with them. So the difference between primary cell and secondary cell.
What is the first point? Primary cell. What is the nature of chemical reaction? It is irreversible. So it cannot be recharged. Since it is irreversible, it cannot be recharged. Whereas secondary cell is based on reversible chemical reaction. Chemical reaction is taking place between from where to where? From negative to the positive. Electrode and electrolyte. अब से वही बोल रहा हूँ. ठीक है? Now second point. What is happening in the cell? Chemical energy is converted into electrical energy when current is drawn from it. So when current is drawn from it means when the switch is on. तभी तो current आएगा. Means cell में पहले तो load connect करना पड़ेगा. And then you have to switch on. Then only it will draw current from it. नहीं तो cell लेके रख दो उसमें से current थोड़ी ना चलेगा. You have to use it. Okay? समझ में आया? सेकेंडरी सेल में क्या होता है? पहले तो चार्ज होना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हाँ, जब ये चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होता है चार्जिंग में, और जब यूज करते हैं तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है. समझ आए? ये देखो मोबाइल जब हम अभी यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. ठीक है, ये देखो अभी हम यूजिंग है तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया. बट व्हेन आई पुट कनेक्ट द अडेप्टर दैट टाइम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल. तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, जब भी इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज सब खत्म हो जाएगा, है ना? जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा जाके इधर न्यूट्रलाइज हो रहा है तो सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, तो हमको फिर से उसमें चार्ज देना पड़ेगा. तो अब उल्टा इसमें जब करंट देंगे तो फिर से इसमें H2++ और SO4- आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड चार्जिंग, है ना? तो पहले फ्री आयंस था तो हमको ये चार्ज मिल गया, फिर बाद में ये फ्री आयंस जब खत्म हो जाएंगे तो करंट बंद हो जाएगा, फिर हमको उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो हम वापस से आयंस क्रिएट कर देंगे इसको. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट. वही इट कैनॉट बी रिचार्ज, इट कैन बी रिचार्ज. फोर्थ पॉइंट, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो अब एक नया चीज आ गया, रेजिस्टेंस. ये भी बता देता हूँ. व्हाट इज रेजिस्टेंस? पहले ये समझो क्या होता है. इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ current. Resist means to oppose. So it is the measure of obstruction or opposition. Obstruction or opposition to the. This will come in more detail in 10th standard, but I am still giving you. So its symbol is R. Resistance symbol is R. Its unit is ohm. It is written as this. Omega. Okay. So what is resistance? देखो अभी हमने क्या बोला था? Shall I explain what is resistance? देखो electrons are flowing through the conductor. ये magnified view of conductor है. ये diagram बना लो तुम लोग, ये तुमको समझ में आएगा. This is magnified view of connecting wire or conductor.
कंडक्टर किससे बनता है? वो भी कॉपर वायर ही होता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? विच अलाउज लॉ ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए फ्री पैसेज है क्या? देयर इज अ stationary positive ion sitting and blocking his way. Understood? So when the electron moves under the influence of the cell, it collides with the stationary ions. So when it collides, it deviates from the path. Then the cell again forces it to keep moving ahead. Okay? So it collides and again moves ahead. So it drifts slowly after a lot of collision. So every collision it loses energy. That energy appears as heat. Okay? So whenever you collide with something, you will produce heat. Like when you hit stones against each other, it will produce heat. Always during collision, heat is produced. So heat is also energy. So that electrical energy is lost as heat. So the connecting wire should have less resistance. More resistance is not good. We are wasting electrical energy. That's why we choose conductor which has less resistance. So copper is a good resistor, a good wire, good conductor. So all good conductors should have less resistance. So it will allow the current to pass through it easily. Allowing the current to pass through it is basically it is allowing the charges to flow through it. Okay. Then what are the other conductors? What are the bad conductors? Bad conductors are rubber, glass, wood. So like, can you see each wire is coated with plastic and rubber. This is insulator. So when you catch it, you will not get a shock. Okay? Everywhere you can see wherever you wire. Okay? When you see wires over there, camera. So it is covered with plastic because it is insulated. You have said, but inside that, when you cut it, you will have copper wire. There you have actual current flow. Okay? So every conducting wire will have resistance, however small. There is no wire with zero resistance. Otherwise, it will become a superconductor. Okay? So each wire will have some resistance. That is measured as ohm. What are superconductors? Superconductors are only in the concept. They act as superconductor at very low temperature, 4 Kelvin etc. What is 4 Kelvin? Minus 269 degrees Celsius. Minus 269 degrees Celsius. Will we survive at that temperature? No. So even if you have a conductor which acts as a superconductor at such a low temperature, that's not useful. So it's only practical in lab environment, not in the real world. So research is on to develop conductor materials, okay, which have superconductor qualities at room temperature. So far we have not succeeded. Okay, so the conductor acts as superconductor only at a very low temperature, which is not practical. Right? So we take a break now and we'll start after the break. Guys, हाँ? कौन-सी देखना है? कैसे को देगा पर? वो मेरी प्रॉब्लम है। क्या है खाने को? कटर है? कटर से ही झाग होगा। चल, ये रेड करेंट। कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर का जी कितना बोलते हैं? देखो कुछ ऐसा तो इंटर का होगा क्या है इंटर का ठीक है